फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आशा करुच्ची आपण मैंने बहुत भलरे थे। तो आम प्रीवियस पार्ट रे गोटे देखी जोटा कि चाइल्डहुड मेंटल डिसऑर्डर कौन थी तार दुईटी टाइप्स आम जाइए। तो नेक्स्ट पार्ट आमर मु शेयर करुच्ची जोटा कि बहुत सारा टाइप्स रही चाइल्डहुड मेंटल डिसऑर्डर तो गोटे पार्ट देखले तो आम कि बुझीपारे। तो आर दुईटी पार्ट अच्छी तो आपण मैंने सब देखिले बहुत भल से बुझीपारे। चलते नेक्स्ट पार्ट आम डिस्कसन करवा। नेक्स्ट टाइप इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इन चिल्ड्रेन। Many children occasionally have thought that bother them and they might feel like they have to do something about those thoughts even if their action don't actually make sense. For example, they might worry about having bad luck if they don't wear a favorite piece of clothing. For some children, the thought and the urge to perform certain action persist even if they try to ignore them or make them go away. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होमर जोटा कि गोटे थॉट आए जोटार मीनिंगलेस थी जोटार मीनिंग किसी नथिबो से थॉट गुड़ाक आसो जमती कि आमर जदि हाथटी धोउथिबा हाथ जते परिष्कार थी जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी रो पेशेंट से माने कौन करते हाथ बार बार धोइबे ताको लगे कि हाथटा बहुत असना हो जाइए से जिते धोइले भी ताको लगे कंपल्सिव थॉट आसो जे नाई ताको हाथ रे किसी असना लगी तो से हाथटा धुआंती। ऑब्सेसिव होमर थॉट जोटा कि मीनिंगलेस थॉट आसो कंपल्सिव जोटा को थॉट को बिहेवियर रे शो करेबा। Then symptoms, OCD symptoms. Having OCD means having obsession, compulsion or both. Example of obsessive or compulsive behavior including having unwanted thought, impulse or image that occur over and which cause anxiety or distress. आमर anxiety और distress जो OCD होता है जो कि anxiety distress रे आमे रहिले हमको आमे भूली जाए कि आमे से कामटी करिचु कि नहीं तो से anxiety main cause होची OCD रा। Having to think about or say something over and over, for example quoting or repeating word over and over silently or out loud. देखिए जड़े जड़े कौन करती बार बार गोटे गोटे वर्ड रिपीट करती लगे कि से कथाटी को कही अन्य जड़े शुणिनी ना तो से कथाटी कही ना तो ओसीडी पेशेंट मैंने एमती ही शो करता। हैविंग टू डू समथिंग ओवर एंड ओवर, हैविंग टू डू समथिंग ओवर एंड ओवर अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स दैट मस्ट बी फॉलो एग्जैक्टली इन order to make an obsession go away. Treatment for OCD. The first step to treatment is to talk with a healthcare provider to arrange an evaluation. A compulsive evaluation by a mental health professional will determine if the anxiety or distress involve memory of a traumatic event that actually happened or if the fear are based on the other thought or belief. The mental health professional should also determine whether someone with OCD has a current or past tic disorder. Anxiety or depression and a disruptive behavior may also occur with the OCD. मुझे कहली कि मेन कज हूँ ओसीडी एंजाइटी आउ डिस्ट्रेस डिप्रेशन। तो फास्ट ट्रीटमेंट करिया कहले आमे मेन कज कौन एंजाइटी और डिप्रेशन कौन किसी ट्रॉमेटिक इवेंट से मैंने फेस कर से थॉटटा आसी तो आम ट्रीटमेंट पूर्व से डायग्नोज करवा। Then prevention of OCD. It is not known exactly why some children developed OCD. OCD कौन में डेवलप होता है एटा हम एक्जाक्टली जान लो। देयर इज लाइकली टू बी ए बायोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल कंपोनेंट। Behavior or conduct problem in children. Children sometimes argue, are aggressive or act angry or defiant around adult. Behavior disorder may be diagnosed when these disruptive behavior are uncommon for the child's age at the time, persist over time or are severe. Because disruptive behavior disorder involve acting out and showing unwanted behavior toward others, they are often called externalized disorder.
जोटा कि आमर बिहेवियर रे प्रॉब्लम बहुत सारा डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर जो शो करता एंग्री होता एग्रेसिव शो करता तो ये सब हूँ आमर बिहेवियर और कंडक्ट प्रॉब्लम चिल्ड्रेन माने शो करता ऑपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर when children act out persistently to that, it causes serious problem at home, in school, or with peers. They may be diagnosed with oppositional defiant disorder, जोटा कि हमारा ODD. ODD usually start before 8 years of age, but no later than by about 12 years of age. Children with ODD are more likely to act oppositional or defiant around people they know well, such as family members, a regular care provider, or a teacher. Children with ODD show this behavior more often than other children their age. এই ଏଜ୍ରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ODDରେ ସଫର ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇସବୁ ବିହେଭିଅର୍ ସବୁ ଶୋ କରିଥାନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ. ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ODD ବିହେଭିଅର୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ often being angry or losing one's temper. ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଯାନ୍ତି ନା ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ଟେମ୍ପରଟା ଲସ୍ କରିଥାନ୍ତି. ଅଫେନ୍ ଆର୍ଗ୍ୟୁଇଂ ୱିଥ୍ ଆଡଲ୍ଟ ଅର୍ ରିଫ୍ୟୁଜିଂ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲି ୱିଥ୍ ଆଡଲ୍ଟସ୍ ରୁଲ୍ସ ଅର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ. ସେମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଡଲ୍ଟମାନଙ୍କର ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ମାନନ୍ତିନି, ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥାନ୍ତି. ଅଫେନ୍ ରିଏଷ୍ଟଫୁଲ୍ ଅର୍ ସ୍ପାଇଟଫୁଲ୍, deliberately annoying other or becoming annoyed with others, often blaming other people for one own mistake or misbehavior. ନିଜର ବିହେଭିଅର୍ ପାଇଁ ଅଦର ଉପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଇଏ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ, ମୋ ଭୁଲଟା କଜ୍ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ. Disorder. Conduct disorder, जोटा short form होची CD, is diagnosed when children show an ongoing pattern of aggression toward other and serious violation of rules and social norm at home, in school, and with peers. This rule violation may involve breaking the law and result in arrest. Children with CD are more likely to get injury and may have difficulty getting along with peers. Example of CD behavior includes breaking serious rule such as running away, staying out at night when told not to, or skipping school. जोटा कि आमर तांको मना करिथिबा राति बाहर बुलबनी तो से माने से सब रूल्स रेगुलेशन भांगी थांती. स्कूल रे तांको जीवाको से माने कोन करथांती मना करथांती कि जाई नथांती. देन बीइंग एग्रेसिव इन ए वे that cause harm such as bullying, fighting, or being cruel to animal. ସେମାନେ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଶୋ କରିକି ଅନ୍ୟକୁ ହାର୍ମ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଫାଇଟିଂ କରିଥାନ୍ତି, ଆନିମଲ୍ମାନଙ୍କୁ ହର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି. ଦେନ୍ ଲାଇଂ, ଷ୍ଟେଲିଂ ଅର୍ ଡ୍ୟାମେଜିଂ ଅଦର ପିପୁଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଅନ୍ ପର୍ପୋଜ୍. ଅନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି. ଏସବୁ ହେଉଛି କଣ୍ଡକ୍ଟ ବିହେଭିଅର୍. ଯେଉଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ସଫର ହୁଅନ୍ତି ଏଇ ଡିସଅର୍ଡ଼ରରେ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିହେଭିଅର୍ ଶୋ କରିଥାନ୍ତି. Next type of childhood mental disorder is ADHD. ADHD is severe type of mental disorder जोटा कि आमर चिल्ड्रेन माने अधिक ये सफर होती. ADHD जार फुल फॉर्म होची अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. यही डिसऑर्डर रे चिल्ड्रेन माने कौन करते अधिक हाइपर एक्टिविटी शो करता, जमीक से माने क्या कथा शुणिबेनी, परफेक्ट अटेंशन तुम सहित आई कंटाक्ट से माने करि परिबेनी, तांको गोटे कथा कहले से माने शुणिबेनी, गोटे काम रे पूरा मजी जाइथिबे आ जोटा कहते पूरा हाइपर होइके अधिक उत्फुल्लित होइके से काम सब करथांती. से माने गोटे टोन वॉइस साउंड करथांती जोटा कि बहुत मीनिंगलेस साउंड से माने बाहर करथांती. देन ADHD इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड. इट इज यूजुअली फास्ट डायग्नोस्ड इन चिल्ड्रेन childhood and often last into adulthood. Children with ADHD may have trouble paying attention, controlling impulsive behavior, may act without thinking about what the result will be, or be overly active. से माने
किसी बिना भाभी कि बिहेवियर शो करते तार रिजल्ट भल हम कि खराब हम से सब से मैंने भाभी न था। साइन एंड सिम्पटम्स इट इज़ नॉर्मल फॉर चिल्ड्रेन टू हैव ट्रबल फोकसिंग एंड बिहेविंग एट वन टाइम और अनदर। यहाँ नॉर्मल होता है कि छोट पिला मैंने बहुत अटेंशन कन्स्टांटली दे पारिना ये नॉर्मल केस रे होता है। किंतु हाउएवर चिल्ड्रेन विथ ADHD do not just grow out of this behavior. The symptoms continue, can be severe and can cause difficulty at school, at home or with friend. ये सब सिम्पटम्स से मैंने डिफिकल्टी फेस करते स्कूल रे डिफिकल्टी फेस करते पीयर्स ग्रुप सांग मान सहित मिसवाकू बहुत प्रोब्लेम फेस करने को पड़ता है। और घरे जो फैमिली मेंबर्स किसी कथा कहले कि कौन कले बहुत प्रोब्लेम फेस करने को पड़ता है विथ ADHD माइटी। तो जदि गोटे चिल्ड्रेन ADHD रे सफर हो तो तार कौन होता है ना डे ड्रीम ए लॉट से मैंने डे ड्रीम बहुत देखी था। फॉरगॉट और लॉस थिंग ए लॉट, स्क्वायर और फाइट, टॉक टू मच, मेक केयरलेस मिस्टेक और टेक अननेसेसरी रिस्क, हैव ए हार्ड टाइम रेसिस्टिंग temptation, have trouble taking turns, have difficulty getting along with others। से मैंने यही सब प्रॉब्लम फेस करता क्या सहित भल से कथा ही पार ना निजर जिनस सब भूली जाती जोटी भी रखिथे। ADHD टाइप देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ADHD डिपेंडिंग ऑन व्हिच टाइप ऑफ सिम्पटम्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन द इंडिविजुअल। फर्स्ट वन इज predominantly inattentive presentation. It is hard for the individual to organize or finish a task, to pay attention to details or to follow instruction or conversation. The person is easily distracted or forget details of a daily routine। तो यही फास्ट टाइप रे से माने कौन करती निजर डेली रूटीन को से माने भूली जाई थांती, से माने भल भाव अटेंशन दे न थांती, तांको निज काम को भल भाव फिनिश करी न थांती टास्क जहाँ भी ताको दिया ही थाए। Another one is predominantly hyperactivity impulsive presentation. The person fight and talk a lot. It is hard to sit still for long for a meal or while doing homework. Smaller children may run, jump or climb constantly. The individual feel restless and has trouble with impulsivity. Someone who is impulsive may interrupt other a lot, grab things from people or speak at inappropriate times। जोटा कि आमर पिला माने कौन करथांती ना अधिक दौड़ी था, जंप करी थांती, से माने का कथा सुनंतीनी। तो एटा सेकेंड टाइप रे ADHD होची combined presentation। Symptoms of the above 2 types are equally present in the person। जेमती कि हमर फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप ADHD रो जोटा गला जो थी कि पिला माने कोन करती भल भाबे अटेंशन दे पारंतीनी, टास्क को तांकर भल भाबे कंप्लीट करि पर नथंती, डेली लाइफ रे ट्रबल फेस करंती। एंड सेकेंड टाइप रे से माने कोन करंती ना अधिक फास्ट रन करी थांती, का कथा सुनंतीनी, हाइपर एक्टिविटी शो करथांती। तो दुईटार कॉम्बिनेशन होची हमर थर्ड टाइप्स, सेतिबे याको कंबाइंड प्रेजेंटेशन कहा जायछि। Cause of ADHD, scientists are studying cause and risk factor in an effort to find better way to manage and reduce the chance of a person having ADHD. The cause and risk factor for ADHD are unknown, but current research shows that genetic play an important role। Recent study of twin linked genes with ADHD आर किसी कज एपर्यंत भल भाव बाहरनी, किंतु रिसेंट स्टडी रू जहाँ जना पड़ी जेनेटिक फैक्टर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करुँची ADHD रो कज पाई। इन एडिशन टू जेनेटिक, साइंटिस्ट आर स्टडिंग अदर पॉसिबल कज एंड रिस्क फैक्टर इंक्लूडिंग ब्रेन इंजुरी, exposure to environment during pregnancy or at a young age, alcohol and tobacco use during pregnancy, premature delivery, low birth weight। आउ ये जो स्टडी रू जना पड़ी जोटा कि आमर ब्रेन इंजुरी जदि है
कि प्रेगनेंसी टाइम रे मदर जदि अल्कोहल कि तबाको इनटेक कला आउ प्री मैच्योर डिलीवरी जदि है गोटे बेबीर कि लो बाथ टाइम रे वेट आमर लो है देन यार ADHD हबार मेन कज होची यही सबू ताकू केमती डायग्नोज करिबा डिसाइडिंग इफ ए चाइल्ड हैज ADHD इज ए प्रोसेस विथ सेवेरल स्टेप there is no single test to diagnose ADHD and many other problems like anxiety depression sleep problem and certain types of learning disability can have similar symptoms. Treatment of ADHD in most cases ADHD is best treated with a combination of behavioral therapy and medication. बेस्ट ट्रीटमेंट होची ADHD रो बिहेवियर थेरापी सहित आम जदि मेडिकेशन दबा तान ADHD को आम प्रिवेंशन बा ट्रीटमेंट करिपरिबा जेमती कि से माने मेडिसिन खाउथिबे ताको सहित ताको बिहेवियर चेंज करिवा पई जेमती कि अटेंशन से माने देई परनाथि तो हमर पेपर जदि आम गोटे चिरिबा छोट छोट पीस करिकी ताको चिरिबा देन आमर अटेंशन रो आई रो जो पावर से बढ़े और अटेंशन भी बहुत भल भाव बढ़ी थाए कि पिला मानको आमे पेंटिंग कराइबा तांको से माने तो ADHD पिला माने से माने केबे कन्स्टेंटली बसिबेनी तो तांको पेशेंट नहीं तांको सहित आमे भल से बिहेव करिकी जदि तांको सहित ये सब एक्टिविटी कराइबा बिहेवियर थेरापी दबा देन आमे तांको ट्रीटमेंट कर परिबा. Learning disorder. Many children with ADHD also have a learning disorder जहार short form होची LD. This is an addition to other symptoms of ADHD such as difficulties paying attention, staying on task or being organized which also keep a child from doing well in school. Learning disorder रे पिला माने कौन करता ना तांकर पढ़ारे बहुत डिफिकल्टी फेस करता से माने ना पढ़ी पारती भल भाव कि लेखि पारती से माने लेटर भितर कौन करती प्रोब्लेम फेस कर ADHD रे पिला माने भी लर्निंग डिसऑर्डर रो बहुत सफर होता बहुत कॉमन टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर आमर लर्निंग डिसऑर्डर होता है जोटा कि बहुत प्राय पिला भी फेस करता. Having a learning disorder means that a child has a clear difficulty in one or more area of learning even when their intelligence is not affected. Learning disorder including dyslexia जहाँ कि हमारे डिफिकल्टी विथ रीडिंग जो मैंने कि पढ़ी पारती से मानू लगे ना लेटर गुड़िक डांसिंग कर भितर कौन सी कोरिलेट न थाए तो से सब प्रोब्लेम फेस करी जो मैंने डिस्लेक्सिया लर्निंग डिसऑर्डर रे सफर होता है. देन अनदर टाइप होची डिस्कालकुलिया डिफिकल्टी विथ मैथ से माने डिस्कालकुलिया रे चिल्ड्रेन को करती मैथ रे बहुत डिफिकल्टी फेस करता जमती कि आमर कॉमन थिंग्स जहाँ को पचार गोटे छोट पिला को जार माइंड मैच्योरिटी जी से अनुसार मैथ क्वेश्चन धर पचार 2+2 पचारे गोटे कॉमन 2 क्लास पिला कहीदे 2+2 4 आइदर 3 और 4 क्लास पिला भी हो पचारे से कहे बट जदि लर्निंग डिसऑर्डर डिस्कालकुलिया सफर होता गोटे चिल्ड्रेन 4 क्लास पढ़ुवा पचार 2+2 से डिफिकल्ट फेस कर से कैलकुलेशन रे. हाँ देन अनदर टाइप हूँ डिस्ग्राफिया डिफिकल्टी विथ राइटिंग लर्निंग डिसऑर्डर थर्ड टाइप्स हूँ डिस्ग्राफिया जो थे कि पिला माने लेखिबारे प्रोब्लेम फेस करती से राइटिंग स्टाइल बहुत इनऑर्गेनाइज होता है से माने बहुत भल भाव लेखि पारती हैंड राइटिंग बहुत खराब होता है आ सहित से माने गोटे प्रॉपर्ली गोटे लेटर हो कि वर्ड हो से माने भलसे लेखि पारती धर कह बी आउ डी लिखो से कन्फ्यूज हो बी जगह डी लिखिदेवे यही टाइप से प्रोब्लेम फेस करते. Treatment for learning disorder. Children with learning disorder often need extra help and instruction that is specialized for them. Having a learning disorder can qualify a child for special education service in school because children with ADHD often have difficulty in school. The first step is a careful evaluation to see if the problem are also caused by a learning disorder. Schools usually do their own testing to see if a child needs intervention. Parents, healthcare provider and the school can work together to find the right referral and treatment. आर ट्रीटमेंट हूँ आमर
ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜେସନ୍ ମେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସଅର୍ଡ଼ର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଯଦି ସଫର ହେଉଥିବ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜ୍ ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତାରେ ଜମିନ ପର ମୁଭି, ସେଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଏଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସଅର୍ଡ଼ରକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେଇଥିରେ ସେ ପିଲାଟି କ'ଣ କରୁଥିଲା, ବହୁତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସଅର୍ଡ଼ର ସଫର ହେଉଥିଲା, ସେ ଡିସ୍ଗ୍ରାଫିଆ, ଡିସ୍କାଲକୁଲିଆ ଏସବୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସଅର୍ଡ଼ରରେ ସଫର ହେଉଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମିର ଖାନ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ, ତାର ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜ୍ଡ ହେଇକି ତାକୁ ଗାଇଡ଼ କରିଥିଲେ। ତ ଆମେ ବି ଯଦି ଜଣେ ପିଲା ସଫର ହେଉଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସଅର୍ଡ଼ରରେ, ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ଆଉ ସୋସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ବିନା ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଭଲ ଭାବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବାନି। ସେମାନେ ବହୁତ ଚାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କେୟାର, ଏକ୍ସଟ୍ରା କେୟାର ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତାଙ୍କୁ କେୟାର କରି ତାଙ୍କ ବିହେଭିଅରକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ତ ତାଙ୍କୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜ୍ ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷରେ କୋର୍ସ କରିଥିବେ ସେଇଭଳି ଟିଚର ଗାଇଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଏହି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟକୁ, ଏହି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିସଅର୍ଡ଼ରକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକା।